Hello, hi, namaste. I am Samir Satpathy, welcoming you to the lecture number 3 of electric charge and field. Okay, so last class रे आबे discuss करथिले Coulomb's law विषय that is electric forces which are acting between two charges. आज आम कौन करवा गोटे नुआ टॉपिक पढ़ा कि जदि आम पाखे गोटे गिवन चार्ज अच्छे आ से चार्ज सराउंडिंग आउ किसी चार्ज अच्छा से माने केमिति गोटे चार्ज रे फोर्स पकेबे आउ से चार्ज ऊपर नेट फोर्स केते होबे से हम बाहर करिया ठीक ओके सो आज रो टॉपिक अछि हमरो इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज electric force due to multiple charges जो कि हम पढ़िबा and another one is a new topic that is electric field. So before going to the topic last class में तुमको गोटे होमवर्क देइथिली से क्वेश्चन टिके डिस्कस कर देबा देन हमें आगु जीवा चलो सो हम पाखरे क्वेश्चन अछि 2 point charges which are plus 4e and minus e are fixed at a distance r apart. Where should a third point charge q be placed on the line joining of two charges so that it may be in equilibrium? तो मु फिगर ड्रॉ कर दूँ तुमको भाव से बुझा पड़ेगा. Let's say this is plus 4e charge and this is minus e charge. ठीक अच्छे तो मुझे गोटे को पॉजिटिव चार्ज बोली नौची गोटे को नेगेटिव चार्ज बोली नौची आउ सेमान को भितरे डिस्टेंस अच्छी लेट्स से सेमान को भितर डिस्टेंस अच्छी केते ना r ओके आमको कौन कर गोटे क्यू चार्ज को लेकिन है कोठी एमती गोटे रखार अच्छे कोठी एमती गोटे प्लेस कर सो दैट क्यू चार्जटा इक्विलिब्रियम रे रहबो इक्विलिब्रियम रे रहबो मीनिंग कोन ना क्यू चार्ज ऊपर नेट फोर्स जो अच्छे सी कौन पड़ो जीरो पड़ो नेट फोर्स जीरो हम आर मीनिंग बोथ साइड रे जदि फोर्स पड़ुछि से धीरे जाको फोर्स रो मैग्नीट्यूड सेम होबार अछि हां कि ना तो सेटा हमें देखिबा टिके लेट्स से दिस इज द क्यू चार्ज हला जदि मु ए चार्ज को नेकी ए पाखरे कोड रखुछि माने दैट इज प्लस 4e आउ माइनस e मझे जदि कोड कोड रखिबी ताले कोन होबो देखो एटा पॉजिटिव चार्जटा आउ एटा पॉजिटिव चार्जटा तो पॉजिटिव चार्ज कौन हम रिपल्सन हम माने पॉजिटिव चार्ज जोटा कि प्लस 4e अच्छी सी ए क्यू चार्ज ऊपर रिपल्सिव फोर्स पकेबो को डायरेक्शन रे फोर्स पकेबो ना राइट हैंड साइड डायरेक्शन रे फोर्स पकेबो एंड सेटा टिके अधिक रहि जो ठीक सेकेंडली आम जो देखा एपट साइड जो नेगेटिव चार्ज अच्छे नेगेटिव चार्ज अच्छे सी कौन कर क्यू चार्ज ऊपर एट्राक्टिव फोर्स पकेबो कौन पाए ना गोटे नेगेटिव गोटे पॉजिटिव कोड डायरेक्शन रे पकेबो अगेन सही राइट साइड रे पकेबो तो पॉजिटिव चार्ज जो थिला सी राइट साइड रे फोर्स पकेला रिपल्सिव फोर्स और नेगेटिव चार्ज जो अछि सी एट्रैक्टिव फोर्स पकेला राइट साइड रे मते को क्यू चार्ज टा बर्तन इक्विलिब्रियम रे रहइबो कि जमा भी नहीं कोन पे रहइबो नहीं ना आ ऊपर राइट हैंड साइड रे ही देर जागा फोर्स पड़ीगला हां कि ना तो हमें ए क्यू चार्ज को मझे कोडी प्लेस करि परिबा नाही ओके जदि मु आकु नै कि प्लस 4 इलेक्ट्रॉन पाखर नै कि रखली माने पॉजिटिव चार्ज पाखर जदि नै कि रखली कोन हबो देखो टिके आपरे फोर्स पड़िबो तो ए पॉजिटिव चार्ज ऊपर लेफ्ट साइड को रिपल्सिव फोर्स पकेबो सेकेंडली ये जो इलेक्ट्रॉन अच्छी ये कौन करिवो अट्रैक्ट करिवो रिपल्सिव फोर्स अधिक पड़िवो अट्रैक्शन कम होबो कोन पई ना आ पाखरे चार्ज बेसी अछि आ पाखरे चार्ज टिके कम अछि हां तो सेही हिसाब रे एपट साइड रे रिपल्सिव फोर्स अधिक हो गेला एपट साइड रे कोन अट्रैक्टिव फोर्स कमी गेला तो एठी भी से इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रहि परिवो नाही जदि मु माइनस e जो अछि नेगेटिव चार्ज जो अछि से पाखु धरि आसे ताले कोन हबो आ ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स पड़ो लेफ्ट साइड रे एंड रिपल्सिव फोर्स पड़ो राइट साइड रे हाँ कि ना तो मते बेसिकली ये चार्ज को किसी गोटे डिस्टेंस रे रखिया अछि लेट्स से मु किसी गोटे डिस्टेंस रे रखली एंड लेट्स से मु गोटे x डिस्टेंस रे रखुछि हला तो एठी कोन होबो एट्रैक्टिव फोर्स पड़ो लेफ्ट साइड को एंड रिपल्सिव फोर्स पड़ो राइट साइड आउ से जाक इक्वल हो पारे कौन पे ना एटी एट्रैक्टिव फोर्स जहाँ भी पड़ो रिपल्सिव फोर्स सेम हो कौन पे ना जो पॉजिटिव चार्जटा अच्छे से क्यू चार्ज टू बहुत डिस्टेंस अच्छी तो ये रिपल्सिव जो फोर्स पड़े से कम पड़ो हाँ कि ना तो आमको क्वेश्चन रे कही एक्स को फाइंड आउट करने चलो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन माने कौन इक्विलिब्रियम कंडीशन माने ये जो क्यू चार्ज अच्छी क्यू चार्ज ऊपर नेट फोर्स जीरो पड़ो एटा को मु लेट से F1 नहीं जाउछि F1 इज द अट्रैक्टिव फोर्स बाय माइनस ई
एंड F2 नहीं जाउची रिपल्सिव फोर्स बाय प्लस 4e तो मु कौन करि परबी F1 इक्वल्स टू F2 लिखि परबी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ द चार्जेस शुड बी इक्वल व्हेनेवर द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम में जदि रहिबो ताले ता ऊपर जो फोर्स पड़ुची से फोर्स गुड़ा कौन रहिबे ना इक्वल रहिबार अछि माने मैग्नीट्यूड इक्वल रहिबार अछि डायरेक्शन ऑपोजिट अछि मैग्नीट्यूड इक्वल रहिबार अछि तो सेही हिसाब से देखिबा हमें kq इनटू F1 जगह रे कोन होछ हमें गोटे चार्ज होची q आ गोटे चार्ज होची -e मन बगाओ फोर्स रो फॉर्मूला कोन थिला F इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर ठीक तो सेही हिसाब रे k q e डिवाइडेड बाय मान गोटे डिस्टेंस केते अछि डिस्टेंस अछि x तो ये जो कौन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 जगह हम कौन लिख परिबा kq इनटू 4e डिवाइडेड बाय डिस्टेंस केते अछि देखो 8 वेती होची r एंड 8 वेती होची x तो टोटल डिस्टेंस केते गला r प्लस x ओके तो हम लिखिबा कौन r प्लस x रो होल स्क्वायर तो से हिसाब से देखिबा हमें kqe कटि जिवो बाकी कौन रह गला 1 बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 by r plus x रो होल स्क्वायर जदि मु बोथ साइड रे रूट ओवर नै जिबे ताले कोन पहुंचबो 1 by x is equals to 2 by r plus x ताको जदि फर्दर सॉल्व करबा हमें केते बन जिवो ना 2x is equals to r plus x and 2x minus x is equals to जिवो r and x is equals to पड़ा जिवो r माने जदि हमें कोन करियार अछि ए -e2 जदि मु r डिस्टेंस रे q को प्लेस करबी ताले से q टा कंडीशन रे रहइबो इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रहइबो दिस इज द आंसर ओके राइट इट डाउन देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट ओके आ गोटे क्वेश्चन अछि हम पाखरे एक क्वेश्चन टा कर दे के हम टॉपिक को जिबो सो द क्वेश्चन इज three equally charged small objects are placed as shown in the figure okay हम अगर फिगर भी अछि तो तीनटा चार्ज अछंदी ओके the object a exerts some force on b केति के एक्सर्ट करछि फोर्स ना ऑब्वियसली एपो डायरेक्शन रे करबो कमे हम कोन कहउछि ना चार्ज इक्वल अछि माने भाबो कि प्लस q चार्ज अछि माने आ पाखरे भी प्लस q चार्ज आ पाखरे भी प्लस q चार्ज आ पाखरे भी प्लस q चार्ज जदि a टा b ऊपर फोर्स पकेबो रिपल्सिव फोर्स ही पकेबो केते फोर्स पकोछि से ना 3 * 10⁻⁶ न्यूटन रो फोर्स पकोछि हो गई ना ओके क्वेश्चन कोन अछि हम पाखरे क्वेश्चन अछि कि व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स डज act by C to B माने एटी जो C चार्ज अछि C चार्ज बॉडी अछि C B ऊपर केमती फोर्स पके पारे मो फर्स्ट मेंशन कर दोछि कि A बॉडीटा B बॉडी ऊपर राइट साइड को फोर्स पकेबो ताको ना दे दबा हमें F B ड्यू टू A हला एंड जदि C द्वारा जो फोर्स पड़छि ताको देखिया को चाहेबा से फोर्स रो डायरेक्शन रहबो लेफ्ट साइड को रिपल्सिव फोर्स होबो एंड सेटा केते हे जिवो माने कोन हे जिवो FB due to C that is FB due to C okay हमको क्वेश्चन रे पचारछि FB due to C बाहर करिया पय केते होबो तो हमें फार्मूला पुट कर दवा k q स्क्वायर कोन पय हला ना आ पाखरे भी q चार्ज अछि आ पाखरे भी q चार्ज अछि डिवाइडेड बाय समान डिस्टेंस केते अछि 1 सेंटीमीटर को कोन लिखिबी 1 * 10⁻² मीटर सेंटीमीटर हमें सॉल्व करनी मीटर रे सॉल्व करिया सेमते एटा कोन हिजबो हमर 2 * 10⁻² मीटर तो 10⁻² रो होल स्क्वायर हां बिना ओके अच्छा हम बाहर कर पे आंसर मते काय लागो कोन पे लागो ना एडी q रो वैल्यू तो देनी क्वेश्चन रे हां ना k रो ना वैल्यू जणा আছে हमको q रो वैल्यू तो देनी तो हमको कोन करिया पड़ो q रो वैल्यू को बाहर करिया पड़ो केन बाहर करिया देखो हमको गिवन कोन देछि ना कहै छी कि द ऑब्जेक्ट a exerts an electric force on object b है ना ओके तो ए बी ऊपर किसी फोर्स पकोछि माने एफ बी ए हमको जाना अछि केते जाना अछि ना 3 * 10⁻⁶ न्यूटन बोली जाना अछि एफ बी ए को कोन लिखि परिबा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय समान होते डिस्टेंस केते अछि ना 2 सेंटीमीटर सेटा को लिखि परिबा में 2 * 10⁻² रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 * 10⁻⁶ तो के क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोन हे जिवो 2 रो स्क्वायर हे जिवो 4 into 10⁻⁴ into 3 into 10⁻⁶ that is equals to 12 into 10⁻10 हला k
क्यू स्क्वायर वैल्यू ये पड़ा आसगला ए वैल्यूटा को लेकिन मुझे पुट कर दूसरी तो एफ बी सी इज इक्वल्स टू कौन जो आसो 12 इंटू 10 टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर -4 तो सॉल्व कले जना पड़ आमको ये 10 पावर -10 -4 ऊपर पड़ा आसो तो -10 + 4 दैट इज इक्वल्स टू -6 न्यूटन तो एफ बी सी आमको जना पड़ा लगे 12 इंटू 10 पावर -6 न्यूटन ओके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गला हमें एफ बी सी बाहर कर सारे सेकंड क्वेश्चन कौन पचार सेकंड क्वेश्चन पचार व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बी बी ऊपर टिके भल से मार्क करो दीटा फोर्स पड़ुछि गोटे होछि एफ बी ए वेक्टर आ गोटे होछि एफ बी सी वेक्टर ओके तो हमको नेट फोर्स बाहर करिया तो नेट फोर्स कौन हबो एफ नेट इक्वल्स टू कौन लिखि दबा हमें एफ बी सी माइनस एफ बी ए एफ बी सी के बाहर ना 12 इंटू 10 पावर -6 न्यूटन माइनस एफ बी आमर गिवन अच्छी दैट इज 3 इंटू 10 पावर -6 न्यूटन तो जब मुझे 10 पावर -6 को कॉमन कर देवी 12 और 3 गले 12 - 3 के आसो 9 तो एतिक न्यूटन रो नेट फोर्स बी ऊपर पड़े बुझीपारे कौन भी क्वेश्चन करने पूर्व सॉल्यूशन तुम्हें वीडियो को पॉज करके निजे करने को ट्राए कर सो दैट तो माइंडटा फिट हो कि जापर कि हाँ एमती क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए जदि हाथ में होनी किसी असुविधा ना डोंट बी वरी सॉल्यूशन देखिए बुझा ट्राए कर कि एमती सॉल्यूशनटा है एंड से क्वेश्चन रो टाइपटा को देखो को टाइप क्वेश्चन है केमती सॉल्व होमती सॉल्व करुँच माने मुझे अप्रोच नौ से क्वेश्चन को सॉल्व करने ओके जी आगू चलो हम पाखे नेक्स्ट टॉपिक अच्छी दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अच्छा लास्ट क्लास में पढ़ते कि गोटे चार्ज आ गोटे चार्ज पर केमी फोर्स पकाउछ ठीक बाय कूलम्स लॉ आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हिसाब से फास्ट में पढ़ी दूसरी कौन लिखा है देन आपको तुमको बुझेबी The principle of superposition states that when multiple charges are interacting, the total forces on a given charge is a vector sum of all the forces exerted on it due to all other charges. सुनाने के बोलते हैं फिगर ड्रॉ करेंगे तो मुझे ट्राई करो भावो कि हम पाखे गोटे चार्ज दैट इज q नॉट है ओके तार सराउंडिंग रे आउ किसी चार्जेस अच्छे जोटा को मुझे q1 लिखि दूसरी देन q2 देन q3 है एमती करके qn चार्जेस अच्छे एंड से लाइन जॉइनिंग गुड़ाक एमती तो q0 ऊपर q1 चार्ज फोर्स पकेबो q2 भी फोर्स पकेबो q3 फोर्स पकेबो qn फोर्स पकेबो केमती फोर्स पकेबो को डायरेक्शन रे फोर्स पकेबो देखो ठीक जदि मु q1 को देखिबी q1 q0 ऊपर कोपड़े फोर्स पकेबो along the line joining पकेबो फोर्स एंड सेटा रिपल्सिव फोर्स हो कोन पे मु एठी धीरे जाको चार्ज को पॉजिटिव नै छी रिपल्सिव फोर्स किछि ए डायरेक्शन में हो बेटा तो आपको मैं कौन ना दे परिबा दैट इज f on 0 due to 1 माने मु एटा को f01 वेक्टर लिखि दोछि किछि प्रॉब्लम नाही नेक्स्ट q2 टा कोन फोर्स माने केमती फोर्स पकड़ देखो किछि डायरेक्शन में फोर्स पकड़ आपको कौन लिख परिया हमें दैट इज f02 वेक्टर सेमिति q3 भी पके परियो फोर्स दैट इज f03 वेक्टर देन qn फोर्स पके परियो दैट इज f0n वेक्टर है तो मते कौन बाहर कर नेट फोर्स ऑन चार्ज q0 तो मु लिखिबी नेट फोर्स ऑन चार्ज q0 according to the superposition principle कौन कहउछि ना the total force on a given charges is the vector sum of all forces exerted on it due to all other charges जेति की चार्ज अछि समस्त किछि किछि फोर्स पकेबे से सबुडा फोर्स रो वेक्टर सम करले हमें नेट फोर्स बाहर करि परिया कोन से गोटे गिवन चार्ज को लेके तो बडी लिखि दोछि f net वेक्टर इज इक्वल्स टू कौन लिख परिया हमें दैट इज f1 वेक्टर दैट इज f01 वेक्टर लिखि दोछि प्लस f02 वेक्टर प्लस f03 वेक्टर एमती करेगी f0n वेक्टर है ओके
F01 वेक्टर केते फोर्स पके पारे ना K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय लेट्स से मान भितर डिस्टेंस होची एटा होची लेट्स से R1 एटा होची R2 एटा होची R3 एटा होची R4 हला R4 तो नो एटा Rn लिखि दोची कोन पे चार्ज होची Qn तो ये जो Rn तो ये कौन हम R1 स्क्वायर प्लस F02 वेक्टर टा कौन लिख परिया हमें ओके एटी डायरेक्शन भी लिखिया पड़ियो हमको तो मैं लिखि दोची R1 क्या हला ओके से हिसाब रे एटा कोन जो K Q2 हला ठीक अछि तापर फोर्स पकोची Q0 ऊपर फोर्स पकोची डिवाइडेड बाय R2 रो स्क्वायर R2 क्या प्लस F03 टा कौन लिख परिया K Q3 Q0 डिवाइडेड बाय R3 रो स्क्वायर R3 क्या प्लस एमडी करिके हम लिख परिया K Qn Q0 डिवाइडेड बाय Rn रो स्क्वायर Rn क्या ओके ना एटो सब जदी वेक्टर हला तो एमदी हम लिखि परिबा दैट इज F नेट वेक्टर जदि मो एटा को टिके नॉर्मलाइज करके लिखिया को ट्राई कर एटा तो एक्चुअली हमरो फार्मूला हला एटा हमरो रियल फार्मूला हला कि हमको वेक्टर सम ही करिवार अछि हमको वेक्टर सम ही करिवार अछि हला तो ताको टे एक्सपैंड करके तुम देखु ओके एबे आको मिनिमाइज करके देखिबा कोन हबो देखो सब जगह Q0 अच्छी सब जगह Q0 अच्छी माने मु Q0 को कॉमन काढी परिबी K भी कॉमन काढी परिबी आ कोन कॉमन काढी परिबा आ कुछ एतिया कॉमन काढी परिबा तो K जगह मु लिखि दोछि दैट इज 1/4 आउ कोन कॉमन काढ दबा जाओ ऊपर चार्ज माने फोर्स पड़ुछि एठी का ऊपर फोर्स पड़ुछि Q0 ऊपर फोर्स पड़ुछि तापर मु लिखि दोछि समेशन होबो Qi divided by Ri रो स्क्वायर into Ri cap अब एठी I is equals to 1 to हमें n जाए नहीं पड़ेगा एटा हम हमरो कोन expression of superposition principle whenever multiple charges are acting on a single given charge and we should find out the net electric force on the given charge तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हिसाब रे हम कोन लिख परिबा Q0 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ओवर I इक्वल्स टू 1 to n Qi डिवाइड बाय R I स्क्वायर Ri क्या बुझि पाबा एक्सप्रेशन दा माने मोडा को मिनिमाइज करला को एक्सपैंड करला एटा मिल जिवो कुछ प्रॉब्लम नै बहुत से बुझि पाले जिबा को write it down then after we will move to the next okay तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लेके किछ क्वेश्चंस कर देखो मो पाखरे गोटे स्क्वायर अछि लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर ऑफ लेंथ a एंड से स्क्वायर रो वर्टिसेस गुडा करे मु कोन करछि किछि चार्ज को प्लेस करछि चार्ज गुडा को आइडेंटिकल अछंती लाइक एटा जदि q हला एटा भी q एंड एटा हला मते कोन करियार अछि कोनोसी गोटे चार्ज ऊपर फोर्स बाहर करियार अछि कि इलेक्ट्रिक फोर्स केते लेट्स से मोर पोजीशन को a बोली नै आउछि आर पोजीशन को b बोली नै आउछि आकु c एंड आकु d नाम देछि अब हमर क्वेश्चन अछि फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट हला ओके सी पॉइंट आमे देखि परछे कोडी अछि सी टा अछि एठी तो हमकु ए क्यू चार्ज ऊपर नेट फोर्स बाहर करे अछि के फोर्स पकेबे ना सर ए जो डी पॉइंट अछि से फोर्स पकेबो ए पॉइंट जे अछि से फोर्स पकेबो और बी पॉइंट जे अछि से फोर्स पकेबो ओके तो हमकु फर्स्ट लाइन जॉइन करिवार अछि ऑलरेडी डी और सी को लाइन जॉइन हे कि अछि बी और सी को लाइन जॉइन हे कि अछि ए और सी को लाइन जॉइन करेवार अछि तो मोठी लाइन जॉइन कर दोछि दिस इज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन ए एंड सी ओके एबे हमें फोर्सेस गुडा को देखिबा फर्स्ट देखो डी सी ऊपर केमते फोर्स पकेबो
along the line joining पकेबो and repulsive force होबो कोन पे repulsive force होबो because एडी दिले जाक चार्ज पॉजिटिव अछंती सेमिति बी सी ऊपर केमति फोर्स पकेबो repulsive force ही पकेबो and सेटा भी line joining ही रहइबो हां तो मैं आपको ना दे दूची that is F on C due to B and this is F on C due to D हैला and देखिबा A C ऊपर केमति फोर्स पकोछ along the line joining पकेबो तो तार डायरेक्शन रहइबो कि ए टाइप एटा को हम कोन लिखि परिबा F C due to A वेक्टर होबो ओके देखो ठीक है एठी F C B वेक्टर बनला एठी F C D वेक्टर बनला ए दिले जाको वेक्टर रो गोटे रिजल्टेंट वेक्टर बनि परिबो हां सर बनिबो को डायरेक्शन बनिबो कि डायरेक्शन बनिबो है ना तो ताकू मु लिखि दोछि ताकू मु शो कर दोछि कि टाइप और कलर चेंज कर दो रिपोर्ट लगे wait I'm changing the color so ये होची f net वेक्टर बा f resultant वेक्टर जरा को मु लिखि दोछि fc वेक्टर बोली हला fc वेक्टर माने होची कोन ना fcd वेक्टर और fcd वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मते नेट फोर्स बाहर करियार थिला तो एबे नेट फोर्स बाहर केमति करिवा मु लिखि परिबी f net वेक्टर इक्वल्स टू कहाँ ऊपर देखो सी चार्ज माने सी पॉइंट ऊपर है सी पॉइंट ऊपर जो चार्ज है ता पाए बोले इलेक्ट्रिक फोर्स लिखछ है तो लिखि परिबा fc वेक्टर प्लस fca वेक्टर ओके ए दिटार जदि हमें वेक्टर सम कर दोचे हमको f net वेक्टर मिल जिवो ओके बिफोर दैट देखो ठीक है एठी fcb कोन हो fcb कोन लिख परिया हमें देडी जाको चार्ज कोन अछि q अछि तो सेही हिसाब रे q k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय एमान भितर डिस्टेंस अछि केते a स्क्वायर एडी भितर डिस्टेंस केते अछि a तो a रो स्क्वायर हिजो सेमिति मु जदी fcb लिखिबी fcd लिखिबी fcd कोन होबो अगेन k q q स्क्वायर एमान भितर डिस्टेंस केते अछि a माने मु कहि परिबी fcb जहा होबो माने मैग्नीट्यूड fcb रो मैग्नीट्यूड जहा होबो fcd रो मैग्नीट्यूड भी सेम होबो दैट इज k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मु आपको कोन कहूची f बोली ना दे दूची ओके एबे हमें fca बाहर करबा fca कोन होबो देखो ठीक है k q स्क्वायर चार्ज q स्क्वायर होबो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस केते अछि ना a अछि जमा नै बोलछ देखो ठीक फिगर टाकू एठी होती डिस्टेंस केते अछि देखो केमि बाहर करिया एटा जदी a हैला आ एटा 90 डिग्री जदी अछि एटा कोन हिजबो a √2 पाइथागोरस फॉर्मूला पके बाहर कर परिबा हमें तो ये हिजबो a√2 रो होल स्क्वायर सब दिन मन रखो डिस्टेंस जो अछि बा जो सेपरेशन अछि ना दिगा चार्ज भितरे नबो आ सब जार a अछि बोले आकु भी a ने की सॉल्व करिवनी तो एटा मिल जिवो हमकु k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इनटू 2 √2 रो 2 हिजबो देखो ठीक बोलसे मु ऊपर k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर को f बोली नेली तो सही हिसाब रे k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर को f बोली लिखि परिबी कुछ प्रॉब्लम नाही तो सही हिसाब रे एटा हिजबो f बाय 2 ओके एबे हमें कोन करबा fc बाहर करबा ए जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाहर करबा हां कि ना तो fc रो मैग्नीट्यूड केते आसीबो रूट ओवर ऑफ f मु सुनो fcb रो स्क्वायर प्लस fcd रो स्क्वायर प्लस 2 इनटू fcb into fcd into cos थीटा लिखि परिबी एटी जो थीटा আছে थीटा इज व्हाट थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स केते रहइबो एंगल ना सर एटा जदी 90 डिग्री अछि एटा भी 90 डिग्री रहइबो तो मैं लिखि देबी कोन थीटा जगह रे 90 डिग्री हला लिखि दो डायरेक्टली आ गुड स्टेप लिखिबो ओके सॉरी तो ये जो f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 90 रो वैल्यू केते 0 cos 0 रो वैल्यू सॉरी sin 0 रो वैल्यू 0 cos 0 रो वैल्यू cos 90 रो वैल्यू 0 तो एटा देखि टर्म 0 हे जिवो बाकी कोन रह गेला 2f स्क्वायर प्लस हाउ कुछ नहीं है दैट इज केबे f√2 तो एटा हमर कोन बाहरला fca बाहरला है ना केते बाहरला f√2 बाहरला बुझि पाला fc बाहर पड़ला सॉरी fca बोछि fc बाहरला
एफ सी रो मैग्नीट्यूड बाहरला एबे आर मैग्नीट्यूड बाहर करबा एफ सी ए ऑलरेडी गिवन अछि हम पाखरे कोन f/2 चलो तो मु जदी एफ नेट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड लिखिया चाहिए से कोन हेजो एफ सी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड प्लस एफ सी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड तो ये कोन हेजो देखो मैंने दुने जो ऐड कर परबे ओके आक जदि हमें रिजल्टेंट फॉर्म रे लिखिबा देखो ठीक कोन लिख परिया एफ सी रो स्क्वायर प्लस एफ सी ए रो स्क्वायर प्लस 2 इनटू एफ सी इनटू एफ सी ए cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री केते आसीबो 1 cos 0 होछि 1 तार रूट ओवर नबा तो रूट ओवर ऑफ एटा कोन हेजिबो f स्क्वायर प्लस f/2 रो होल स्क्वायर दैट इज f/4 हेजिबो प्लस 2 इनटू f स्क्वायर डिवाइडेड बाय केते 2 2 2 कट जिवो बाकी कोन रहला देखो ठीक हमरा आसीबो 4f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर दैट इज रूट ओवर ऑफ f स्क्वायर 4 प्लस 1 5 1 6 6 f स्क्वायर आसो तो हम लिख परिया कोन f रूट 6 एमती सॉल्व कर परिया हम हैला ना तो मैग्नीट्यूड फॉर्म रे देखिया चाहछो बोली कहले ये कोन हेजिवो ना तुम ये मैग्नीट्यूड लिख परियो दैट इज f/2 हला प्लस ये हेजिवो केते f रूट 2 प्लस f/2 दैट इज f जदि कॉमन काट दो छे ये जो रूट 2 प्लस 1 हला ठीक अछि तो ये रहिबो आंसर f हमरो बाहर करछे ऑलरेडी केते kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हला सेरा ने पुट कर दो त हमरो f नेट इज इक्वल्स टू कोन हेजिवो kq स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 1 बाय एटा हेजिवो त आंसर write it down then after we will move to the next ओके हम पाखरे आउट क्वेश्चन अछि जदि देखो ठीक हम पाखरे एमती किसी फिगर्स अछि ये होचे गोटे स्क्वायर एंड ये होचे गोटे कोन ट्रायंगल आ सब जा पाखरे आइडेंटिकल चार्ज अछि दैट इज q q q एंड q q q एमती अछि आ सेंटर पॉइंट गोटे चार्ज देछि q आर सेंटर पॉइंट गोटे चार्ज देछि q आ तुमको पचार कि सेंटर पॉइंट रे माने ओ पॉइंट रे नेट फोर्स केते होबे फोर्स ऑन द फोर्स एट सेंटर O ड्यू टू आइडेंटिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देखो ये ऑल्सो फोर्स गुला देखियो आप टाइम बोली ए चार्ज ऊपर कोपरे फोर्स पड़िबो फर्स्ट लाइन जॉइन कर देके हम फोर्स काटे लाइन जॉइन कर दोची एटा होची लाइन जॉइनिंग एटा होची आउट लाइन जॉइनिंग एटा आप लाइन जॉइनिंग एटा आप लाइन जॉइनिंग तो देखो ठीक है बॉडी ना भी होची मन करो एटा होची ए ये होची ए ये होची बी प्लेस्ड अछि ए सी प्लेस्ड अछि और ये डी प्लेस्ड अछि और ओ पॉइंट हमको नेट फोर्स बाहर करना अछि ओके तो बी ओवर फोर्स पकेबो को डायरेक्शन में फोर्स पकेबो किछ डायरेक्शन में फोर्स पकेबो एंड जदि हमें देखिबा डी ओवर को फोर्स पकेबो रिपल्सिव फोर्स ऊपर पकेबो
देखो इतना कैंसल आउट हो कौन ना कौन अच्छी फोर्स सेम अच्छे मैग्नीट्यूड सेम अच्छे और डायरेक्शन अपोजिट अच्छी सेमती आम देखा सी ओ उपर फोर्स पकेब रिपल्सिव फोर्स आउ ए ओ उपर फोर्स पकेब रिपल्सिव फोर्स ए भी कौन हो कैंसल आउट हो कहीं मैग्नीट्यूड अच्छे सेम अपोजिट डायरेक्शन तो ए केस रे तुम नेट फोर्स एट सेंटर के आसो एट सेंटर इज जीरो ए केस रे भी सेमती ही हम ए केस रे भी सेमती ही हम एपट साइड गोटे फोर्स रपट साइड गोटे फोर्स रपट साइड गोटे फोर्स रे तीन जाक फोर्स कौन हो पार माने को प्लानर वेक्टर हो पार है आउ को प्लानर वेक्टर गुड़ाक जब आम रिजल्टेंट बाहर करिया सेटा केते आसीबो जीरो है एमती क्वेश्चन आसे आ गोटे क्वेश्चन जब मुझे तुमको कहबी कि आम पाखे ट्रायंगल अच्छी ये मन गोटे चार्ज अच्छी लेट से माइनस क्यू ये चार्ज अच्छी प्लस क्यू एठी भी चार्ज अच्छी दैट इज प्लस क्यू तो यहाँ को केमती सॉल्व करिया ट्राई कर फर्स्ट देखो प्लस क्यू चार्ज का माइनस क्यू चार्ज को एट्राक्ट करिवो किसी डायरेक्शन रे एंड ए प्लस क्यू चार्ज का आपको एट्राक्ट करिवो ए डायरेक्शन रे हां बेटा आर फोर्स केते पड़िवो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय मनकर आर लेंथ होची l आ एटा होची गोटे इक्विटोरियल ट्रायंगल माने से मनकर कोन साइड लेंथ कोन थाउची ना समान थाउची so l ही होची लेट से तो के क्यू बाई एल स्क्वायर हो भी कौन हम के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर है तो आमको नेट फोर्स बाहर कर तो दुटा वेक्टर रिजल्टेंट नहीं जावा दैट इज एफ नेट वेक्टर इक्वल्स टू कौन हम रूट ओवर ऑफ तार जो मैग्नीट्यूड नौचे आम कौन हम देखो यहाँ मुझे एफ लिखिदेवी तो एफ इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिखिदेली दैट इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कौन पे ना एफ एफ ही फोर्स पड़ुची आगे एंगल के बनब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल अच्छे मन एंगल बनब 60 डिग्री तो मुझे लिखिदेवी cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री वैल्यू के रूट ओवर ऑफ एफ स्क्वायर हो 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2 2 कैंसल आउट होगा रूट ओवर ऑफ 3 एफ स्क्वायर रहेगा 3 एफ स्क्वायर जो आम रूट ओवर बाहर करिया ये हो एफ रूट 2 एफ के नहीं आम के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर तो लिखिदेव के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर इंटू रूट 3 यहाँ हो तुम नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू जब माइनस क्यू रे नेट फोर्स बाहर करिया चाहूँ ओके बुझीपारे जिनसा तो आर टाइप ऑफ क्वेश्चन आम कर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हिसाब से ठीक अच्छे ये भी तुम कौन हम एफ नेट फोर्सटा जीरो हम एट सेंटर केते हम जो कि आइडेंटिकल चार्जेस थे है सब जगह आइडेंटिकल माने क्यू चार्ज थी पॉजिटिव चार्ज थी मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है रही बर्तमान जा गोटे नुआ टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी पर देखा फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बुझे ओके इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम एमती बुझ कि आम ए जाए कौन करछे फोर्स बा इंटरैक्शंस विषय डिस्कस करछे ओके ठीक है को एमती ही सॉल्व करा कॉस मुझे करली सेमती करा यहाँ को डिलीट कर दूसरी ओके आप है चलो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन ना आम कुलम्स लॉ रे पढ़ले कि दीटा चार्ज जदि अच्छी दीटा चार्ज जदि अच्छी विथ सम सेपरेशन आर से भितर कौन हम किसी फोर्स पड़े को टाइप फोर्स हम दैट इज एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स राइट तो जदि फिजिकली फोर्स पड़े आम बुझीपारे लाइक मो आगे गोटे ऑब्जेक्ट अच्छे मुझे फोर्स पकड़ तो बुझी हो हाँ फोर्स पड़ला और से ऑब्जेक्टा मोशन करला बट एठी कौन होची किछि गोटे डिस्टेंस रे हम ऑब्जेक्ट को रखिछे आ गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर से फोर्स पकोछि को टाइप ऑफ फोर्स पकोछि ना इलेक्ट्रिक फोर्स पकोछि तो एठी जो फोर्स अप्लाई होछि सेटा कोन हे गला एक्शन एट ए डिस्टेंस हे गला माने बहुत डिस्टेंस से हम कोन करले फोर्स को एज्यूम करले ओके माने फोर्स ही अप्लाई करछि बेसिकली
तो आपको हमें बुझा बोली फील्ड कनसेप्ट को बुझा पड़े। फील्ड कनसेप्ट माने जदि मु इलेक्ट्रिक फील्ड विषय तुमको कहबी गोटे सोर्स चार्ज आम ना, ठीक अच्छे से सोर्स चार्ज कौन कर चारिपट गोटे फील्ड तैयारी कर आउ से फील्ड भितर जो कौन भी फोर्स चार्ज को लेकिन जब रखा से चार्जटा ड्यू टू सोर्स चार्ज किसी फोर्स एक्सपीरियंस कर कौन पाई ना सी सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भितर अच्छी बुझीपार आपको लेकिन आम फोर्स को स्टडी कर फोर्स को बुझीपार कि केमी फोर्सटा एप्लाय होमती ना भाव फॉर एग्जांपल कि आम पाखे गोटे स्पाइडर नेट अच्छे स्पाइडर नेट देखिए समस्ते तो स्पाइडर नेट रे जब कौन से इनसेक्ट आसिक पड़ा ताले से इनसेक्टा किसी एक्सपीरियंस कर कौन एक्सपीरियंस कर फसीगला एक्सपीरियंस कर हाँ कि ना सेम से टाइप स्पाइडर हूँ कि सोर्स चार्ज आउ जो नेटा या तार फील्ड से फील्ड भितर जब कौन से इनसेक्ट पड़ा आसगला मैंने कौन से अन्य चार्ज आसला ताले से अन्य चार्जटा किसी एक्सपीरियंस कर कौन एक्सपीरियंस कर फोर्स एक्सपीरियंस कर ड्यू टू द सोर्स चार्ज तो से सराउंडिंग टाक आम कौन कौचे फील्ड बोली कौचे कौन लिखाई है बुझे टे इलेक्ट्रिक field can be defined as a space around a charge in which its influence can be experienced by any other charged particles present there है तो जब हम पाखे गोटे चार्ज अच्छी ये हूँ लेट्स से सोर्स चार्जटा ये हूँ सोर्स चार्ज दैट इज Q which having positive charge basically तार चारिपटे गोटे फील्ड बनी थो तो से फील्ड भितर मुझे गोटे पॉइंट नहीं आउे लेट से P से P पॉइंट उपरे जदि मु कौन चार्ज को लेकिन रखी मुझे बर्तमान Q0 चार्ज को लेकिन रखुच्छी Q0 चार्जटा बेसिकली टेस्ट चार्ज कौन पाई नेली मु कहबी आगु बर्तमान जस्ट तुम्हें देख कि P पॉइंट में कौन कली गोटे Q0 चार्ज को लेकिन जब रखी Q0 चार्ज को लेकिन जब रखी से Q0 चार्जटा किसी फोर्स एक्सपीरियंस कर को डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर जहाँ पॉजिटिव चार्ज अच्छी Q0 टा पॉजिटिव चार्ज अच्छी तो ये फोर्स एप्लाई हो राइट हैंड साइड ओके तो जो फोर्स पड़ो Q0 ऊपर सी रिपल्सिव फोर्स हम तो फोर्स एक्सपीरियंस को साइड हम राइट साइड आड़े ठीक अच्छे बुझीपारे आम इलेक्ट्रिक फील्ड माने कौन नेक्स्ट देखा इलेक्ट्रिक फील्ड strength of electric field at a point in space can be measured in terms of two measurable quantities. One is electric field intensities, which is a vector quantity, and electric field potential, which is a scalar physical quantity. हम रखो इलेक्ट्रिक फील्ड माने कौन बुझले एवं तार स्ट्रेंथ को मन कैलकुलेट कर मेजर कर आम दुईटा फिजिकल क्वांटिटी द्वारा कैलकुलेट और मेजर कर वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जोटा कि तुम ए चैप्टर में पढ़ो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर ओके एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जोटा कि सेकंड चैप्टर में देखा दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ता द्वारा हम कौन कर फील्ड को डेमोन्स्ट्रेट कर ओके राइट डाउन देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट next we have electric field intensity तो बेसिकली आम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ार अच्छी ये चैप्टर में है ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन आपको केमती आम डिफाइन कर शुण टे भलसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज ओके ये गोटे पॉइंट मन रख without disturbing the source charge है माने आमे जो सोर्स चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करियार अछि ताकू डिस्टर्ब करिया नै एमबी कोन फाइ सुन टेस्ट चार्ज नंबर रीजन हो जे एटा एठी हम पाखरे गोटे सोर्स चार्ज अछि दैट इज Q मु जदी एठी गोटे Q चार्ज नै थांती तो ए Q चार्ज रो भी किछि गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड होइतंदा हां कि ना ए Q चार्ज रो किछि गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अछि तो आर इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट पकेबो ना नहीं पकेबो ताहले ए Q चार्जटा एपटे रिपेल हेगी पड़े जिवो ऑब्वियसली रिपल्सन हो रिपेल जदी हेगी पड़े गला आमे आकु जो नै कि स्टडी कर परिबा नाही तो हम पकरे दीटा माने कोन अछि उपाय अछि हला आकु स्टडी करिया पे एक तो ए Q चार्ज को फिक्स बोली एज्यूम करबा
अदरवाइज आम ये एमती गोटे चार्ज नवा जार चार्ज जो अच्छी से टेन्स टू जीरो थी माने टेन्स टू जीरो माने चार्ज इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट चार्ज इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज ओके सो दैट आमर जो सोर्स चार्ज अच्छे सी डिस्टर्ब हम ना से जो जगह से जगह रहिबो बाकी आमे आ ऊपर पड़ुवा फोर्स को लेकिन कैलकुलेट करि परिबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके तो जदि आम पाखे गोटे सोर्स चार्ज अच्छी wait a minute ओके मन कर सोर्स चार्ज टू आम कौन करछे जो पी पॉइंट आने से लेट से आर डिस्टेंस अच्छे केते डिस्टेंस अच्छे ना आर डिस्टेंस अच्छे तो मत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन केमती लिखिपर आम देख से डिनोट करछे ई वेक्टर द्वारा ताको लिखिबा आम बस देख ये पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज केतिकी इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ुची आउ को चार्ज उपरे पड़ुची तो लिखिबा हम कौन एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय को चार्ज उपरे पड़ुची क्यू नॉट है एठी आम लिमिट नहीं परिबा दैट इज क्यू नॉट टेंस टू जीरो ठीक अच्छे तो ये तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला आपको जो मैग्नीट्यूड फॉर्म देखा इन मैग्नीट्यूड फॉर्म बस स्केलर फॉर्म बेसिकली ये कौन हो E इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट जो आम टेस्ट चार्ज नौचे तो से हिसाब से क्यू नॉट माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज पर टेस्ट चार्ज ठीक अच्छे बहुत से देख टे एंड निजे टे पढ़ा ट्राए कर मुझे कौन कहना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत से बुझा पड़ा नेक्स्ट पॉइंट आमर अच्छी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट बहुत सुनो हम पाखे ओके सम आर डिस्टेंस रे मु कौन करथली गोटे चार्ज को प्लेस करथली दैट इज टेस्ट चार्ज आ ता ऊपर मु फोर्स देखथली फोर्स रो डायरेक्शन केम थिला फोर्स रो डायरेक्शन थिला राइट साइड को अच्छे टाइप तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन भी सेमती ही रहइबो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कोन फोर्स एपर साइड रे पड़ला तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन भी रहइबो सेमती का दैट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड okay so आम लिखि पारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एबे हम कोन करबा एसआई यूनिट बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड रो तमे ही बाहर करो केम बाहर करिया फार्मूला देखो ठीक है E इज इक्वल्स टू F by Q नॉट अछि तो E इज इक्वल्स टू F by Q नॉट अछि F रो यूनिट होछि कोन N Q नॉट रो यूनिट होछि कोन C तो आम लिख पारे कौन आर यूनिट हो एन सी ओवर माइनस वन आउरी गोटे यूनिट अच्छे दैट इज वेट आई एम सेइंग दैट जस्ट गिव मी 2 sec दैट इज V by M और VM इनवर्स एटा केमती आसला एटा तुमको सेकंड चैप्टर में कहबी एटा तुमको सेकंड चैप्टर में कहबी हैला तो ये दुटा ऐसा यूनिट बनी पार नेक्स्ट आम देखा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड केम जानी पार E इज इक्वल्स टू अच्छी F by Q नॉट माने F रो डायमेंशन हो M L T ओवर -2 डिवाइडेड बाय Q रो हो A into T तो डायमेंशन कौन पास आरो M L है A इनवर्स एंड T +1 था ऊपर पड़ेगा -1 हो तो -2 -1 के दीजिए -3 ये जो डायमेंशन ये गोटे पॉइंट लिखा है if a test charge experiences no force at that point
माने आम ये गोटे पॉइंट नेले आ से पॉइंट मन कर से टेस्ट चार्जटा कौन फोर्स एक्सपीरियंस करूनी ताहले आम कौन कह द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज जीरो ऑब्वियस कथा हम फील्ड इंटेंसिटी को सेमती ही बुझे कि जदि फील्ड उपरे आम कौन गोटे पॉइंट नौचे और से कौन गोटे चार्ज को रखुचे हाँ तो से चार्जटा ड्यू टू द सोर्स चार्ज किसी फोर्स एक्सपीरियंस करिवो जदि फोर्स एक्सपीरियंस करूनी माने से पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं माने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अछि write it down then after we will move to the next then एबे देखियो आमे पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड माने एबे हम कोन करले कोनोसी गोटे सोर्स चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड को नेकी स्टडी करले कि सोर्स चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जदि कोनोसी पॉइंट को नोचे से पॉइंट ऊपर जदि कोनोसी चार्ज को रोकछे से चार्जटा ड्यू टू सोर्स चार्ज किसी फोर्स एक्सपीरियंस करिवो आउ तार इंटेंसिटी फॉर्मूला हम देखले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गोटे कथा आगा जोटा भी यूज करले भी चलिवो हेलो ना हां E इज इक्वल्स टू हम कोन लिखले F/Q बा F/Q नॉट एबे हम देखिए पॉइंट चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड माने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जिस्ट करूची कौन से गोटे सोर्स चार्ज पाए बोली इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे और से इलेक्ट्रिक फील्ड भितर हम कौन से चार्ज को लेके रखियो ताले कोन हो देखो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के छोड़ अच्छी तो जदि one point charge q is placed at a point in an electric field which is produced by some other stationary charges कौन होबो ना the charge q will experience an electric force केते इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करि परिबो देखो हम फार्मूला पढ़ले E is equals to F/Q तो से हिसाब रे F इक्वल्स टू कोन लिख परिया Q तो एति की फोर्स से एक्सपीरियंस करबे आपको वेक्टर फॉर्म में जब लिखिया होछ ताले E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर बाय Q Q हे पारे Q नॉट हे पारे टेस्ट चार्ज हम कंबाइन कहली यदि Q लिखिबो ताहले सेटा को फिक्स बोली मानिया पड़ो काहा को सोर्स चार्ज टा ओके तो F वेक्टर इक्वल्स टू Q इनटू E वेक्टर हम लिख परिया एबे हम देखिबा केति फोर्स जानले पड़ियो फोर्स तो पड़ियो फोर्स केति पड़ियो सेटा भी देखि देले बाकी एबे देखिबा हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज को डायरेक्शन रे फोर्स पड़ियो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेशन केमति थिले तो तापे मु इलेक्ट्रिक फील्ड बने दोछि लेट्स से एमडी इलेक्ट्रिक फील्ड अछि हेलो फर्स्ट केस रे मु कोन करछि ओटे पॉजिटिव चार्ज को नेछि हैला और सेकंड केस रे मोटे नेगेटिव चार्ज को नेछि तो पॉजिटिव चार्ज केस रे जो फोर्स पड़िबो सेटा along the direction of force पड़िबो एटा हमरो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि E वेक्टर और जो फोर्स पड़ियो F वेक्टर दैट इज एक्टिंग along the direction of electric field जदि नेगेटिव चार्ज अछि ताले ता ऊपर जो फोर्स पड़ियो सेटा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पड़ियो दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एटा कमेडी मन रखि परियो हैला इलेक्ट्रिक फील्ड अछि लेफ्ट साइड राइट साइड को आ से हम जदि पॉजिटिव चार्ज नेले ताले पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स पड़ियो along the direction of electric field नबो पड़ियो एंड नेगेटिव चार्ज जदि अछि सेटा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ियो कमेडी लिखि दोछि फॉर पॉजिटिव चार्ज F vector will act along E vector हैला अब आप देखिए जदि फॉर नेगेटिव चार्ज F vector will act opposite to E vector. Okay, write it down quickly, then after we will move to the next. चलो हम पाखे एक क्वेश्चन पड़ा क्वेश्चन कौन अच्छे देखा मस्त पढ़िया ट्राए कर नीचे सल्व करा ट्राए कर तो वीडियो को पॉज करके माने फास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ुଛି तो मस्त पढ़ो और वीडियो को पॉज करो नीचे करिया ट्राए करो तापर जब सॉल्यूशन देखो एंड बुझिया ट्राए करो
So first question हम पाखरे अछि, if an oil drop of weight 3.2 into 10 to the minus 13 Newton is balanced in an electric field of this much, 3.2 into 10 to the 5 V by M, find the charge on the oil drop. तो हम पाखरे गोटे oil drop अछि, ये होछि लेट्स से oil drop. आपको मते कौन करियर अछि, बैलेंस करियर अछि इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड रो ओरिएंटेशन केमते थिबो मते को आपको बैलेंस करियर अछि. तो आर जदि किछि वेट अछि आ ऊपरे कोन हबो फोर्स पडिबो, दैट इज को टाइप ऑफ फोर्स एटा ग्रेविटेशनल फोर्स पडिबो को डायरेक्शन रे तळको पडिबो. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच विल एक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड. तो एटा को हम कोन लिख परिया mg केते हिजिबो 3.2 into 10 to minus 30 न्यूटन, जोटा कि गिवन अछि क्वेश्चन रे. जदि ऑयल ड्रॉपटा तळको माने ऑयल ड्रॉप ऊपर तळको फोर्स पडुछि, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को को डायरेक्शन रे रखिबा भाउडी. इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें ऊपर को रखियार अछि, डिपेंड करछि कि ऑयल ड्रॉप ऊपर को टाइप ऑफ चार्ज अछि, हमको सेटा बाहर करियार अछि हला. जदि मु इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर को रखुछि, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन को मु कोन करदेली ऊपर को नै गली. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर को अछि. जदि एटा पॉजिटिव चार्ज हबो, जदि एटा पॉजिटिव चार्ज हबो ताले डायरेक्शन ऑफ फोर्स कोन रहबो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एटा कोन लिख परि Fe लिखि परबे. तो एठी हमें आकु बैलेंस करिया पई हे Fe को mg सहित इक्वेट करियार अछि, माने इक्वल करियार अछि होगे ना. Fe is equals to कौन लिख परिया इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे कौन से गोटे चार्ज अछि, जस्ट हमें देखि के आसले एटा खाली पेज गोटा कौन बे अछि आई ऑल्सो डोंट नो हला. हां तो F इक्वल्स टू QE हम देखले केते फोर्स पडुछि ना, QE फोर्स पडिबो केते बेले जलकी कौन से गोटे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे रहउछि. तो Fe is equals to हम कौन लिख परिया QE एंड दैट इज इक्वल्स टू mg. हमको E गिवन अछि कि हां सर गिवन अछि, दिस इज E हला और mg गिवन अछि. तो हमें Q इज इक्वल टू कौन लिख परिया mg डिवाइडेड बाय E हला. तो mg केते जो हमरो 3 mg माने से वेट है ना 10 to the minus 13 न्यूटन डिवाइडेड बाय E होचे केते 3.2 into 10 to the 5 वोल्ट पर मीटर. तो मोड ही यूनिट्स लिखो हला डायरेक्टली हम लिखियो. तो 3.2 कटि गला 10 to the minus 3 थिला ऊपर को 5 जिवो माने -5 हे जिवो -13 -5 केते जिवो 358 हां. तो हे जिवो -18 कूलम. तो Q हे जिवो केते 10 to the minus 18 कूलम. केते बळे जेतले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को अछि आ पाखरे पॉजिटिव चार्ज तो केते चार्ज रहबो 10 to the minus 18 कूलम. ओके सॉल्व बुझियला. Then your next question, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0, that is 2 into 10 to the 4 Newton per coulomb. Find out the time of fall. Question also is हम पाखरे इलेक्ट्रॉन अछि which falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field. फर्स्ट मु यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दोछि. लेट्स से ये होछि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होछि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ से भितरे कोन होछि ना गोटे चार्ज होछि दैट इज इलेक्ट्रॉन. ये होछि इलेक्ट्रॉन चार्ज से फॉल करछि हला. इलेक्ट्रॉन ला कोन करछि फॉल करछि. ये होछि इलेक्ट्रॉन हला. डिस्टेंस केति कवर करियो कहलो 1.5 सेंटीमीटर कवर करियो. आपको हमें जदि मीटर कन्वर्ट करियो ये जो 1.5 into 10 to the minus 2 मीटर. ओके ये फॉल करछि हला. फॉल करछि को लिखा छी फॉल करछि आर मीनिंग कोन कहलो इलेक्ट्रॉन रो इनिशियल वेलोसिटी केते अछि 0. मन रखो फॉल करछि इनिशियल वेलोसिटी केते अछि 0. ओके इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्ट्रेंथ कहै छी केते E is equals to 2 into 10 to the power 4 n per coulomb. हमको कौन करे अछि टाइम ऑफ फॉल बाहर करे अछि कि 1.5 सेंटीमीटर कवर करिया पे केते टाइम लागो. तर टिके मिक्स टाइप क्वेश्चन हे गला. अच्छा हमको टाइम बाहर करिया अछि. हमें S is equals to ut plus half it square फॉर्मूला पके परिया कि मन पकाओ फास्ट ईयर रे थिला
एटी हमको एस गिवन अच्छी हाँ सर गिवन अच्छी यूटी 0 हो कौन पाए ना फॉल कही तो यू इक्वल्स टू 0 बाकी रहीगला कौन हाफ ए टी स्क्वेयर ओके हमको टी स्क्वेयर बाहर कर टी बाहर कर अच्छा एस जना अच्छी एटा जना ना तो हमको ए फेर आउट बाहर करा पड़ो एटा केमती बाहर करा देखो टिके इलेक्ट्रॉन ऊपर फोर्स पड़ो ना नहीं तौर को फोर्स पड़ो के फोर्स पड़ो ना एफ फोर्स पड़ो माने मु एफ इज इक्वल एट लिख दूचे एफ इज इक्वल टू कौन लिख पारे क्यू इंटू ई लिख पारे हाँ कि ना एफ इज इक्वल टू आम लिख पारे कौन एम ऑफ ई माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन केतिके एक्सेलरेशन सब तौर को आसुची मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ई इंटू ई हम ओके हमको एक्सेलरेशन बाहर कर तो ये कौन हो ई कैपिटल ई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मन अच्छे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मन रखो 9.1 इंटू 10⁻31 kg अच्छा ई जगह हम लिखी देवा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाय ई हमको देखिए 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो 9.1 इंटू 10⁻31 है आपको हमें सॉल्व कर देवा कितना आसो देखो 1.6 इंटू 2 दैट इज 3.2 3.2 डिवाइडेड बाय 9.1 है ये जो 10⁻19 अच्छी और ये 4 19 -4 के -15 ये +31 तो +31 -15 केते 11 to 5 गले 6 एटी केते हमरो 2 2 1 16 तो आम लिखा यहाँ के 10⁻16 ओके आपने सॉल्व करिया आम जो हम पाखापाखि वैल्यू बाहर करिया 3.2 अच्छे और तले 9.1 अच्छे पुट कर दो देखिए कौन अच्छे तो एस हमको गिवन अच्छी 1.5 इंटू 10⁻2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए जगह लिखे देवा 3.2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻16 है ना ओके हाँ इंटू टी स्क्वेयर तो टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कौन है 1.5 इंटू 10⁻2 है देन मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10⁻16 एटा को सॉल्व करियो 1.5 रहेगा मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 9.1 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10⁻16 ऊपर जो -16 जो -16 -2 के -18 तो टी स्क्वेयर आसला कि टी इज इक्वल्स टू एटा को सॉल्व करि परिबो ए पोर्शन को सॉल्व करि परिबो 1.5 इंटू 2 के 3 इंटू 9.1 करिबो डिवाइड बाय 3.2 एटा पाखापाखि 3 पॉइंट समथिंग आसीबो हला ना जदि हम रूट ओवर भी बाहर कर देबा पाखापाखि सॉल्व करियो एटा को बोलसे मु जस्ट खाली पाखापाखि वैल्यू रखिछि अप्रॉक्स वैल्यू रखिछि 3 पॉइंट समथिंग आसीबो हला 3 पॉइंट समथिंग आसीबो इंटू 10⁻−18 सेकेंड ओके दैट्स सॉल्व करियो ठीक है ना चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन An electric field E is set up between the two charged plates. दीटा चार्ज प्लेट अच्छी फर्स्ट ड्रॉ कर दो दीटा चार्ज प्लेट ये हूँ गोटे चार्ज प्लेट ये हूँ आ गोटे चार्ज प्लेट ओके लेट से ऊपरटा पॉजिटिव चार्ज अच्छी चार्ज प्लेट माने कौन से गोटे चार्ज थी से प्लेट पाखे आ तलटा अच्छे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन रहा पॉजिटिव रु नेगेटिव आड़ को तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन okay an electron enters the field symmetrically between the plates with the speed of v naught मु कौन करली गोटे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को छाड़ली v naught स्पीड तो से केमती जीवो देखो ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड तळू पड़ुछि हाँ बेटा
आउ एटा नेगेटिव चार्जटा नेगेटिव चार्ज हेले कौन हम इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पड़ो सो से इलेक्ट्रॉनटा किसी ए टाइप पाथ कवर कर देख टे केमती पाथ कवर कर बुझिपार कहीं फोर्स तार अपोजिट डायरेक्शन में पड़ो इलेक्ट्रिक फील्ड माने कौन तलू अच्छी फोर्स ऊपर पड़ो तो सी किसी ए टाइप पाथ कवर कर ओके द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज एल माने ये लेंथ के एल ओके फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ of the electron as it comes out of the field सुनो deviation of the path कहूँ आर मीनिंग से जो पाथ रे आसला सी बेसिकली सीधा आसता बट से एमती ऊपर पड़ जाउछि माने किछि गोटे एंगल कवर करछि हो बिना किछि गोटे एंगल कवर करछि से एंगलटा को हमको बाहर करियर अछि ए एंगलटा केते हो एंगल आसला बेले हम माइंड को आसे अछि कोन tan थीटा ओके बहुत सुनो एटा टिके कौन मिक्स टाइप क्वेश्चन आएगा मतलब तुम जब मोशन इन प्लेन बहुत सही है तुम बुझा पड़ो देख टे ए पॉइंट रे से चार्ज रो दीटा वेलोसिटी हे पारे गोटे वेलोसिटी रहइबो सीधा जो हम कोन कहि परिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहि परिया आ गोटे कंपोनेंट कोन रहिजो देखो एटा एक्चुअली जदी वेक्टर होला वेलोसिटी वेक्टर होला v वेक्टर तार गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हे गोटे वर्टिकल कंपोनेंट हे हाँ बेटा हमको थीटा tan थीटा बाहर कर tan थीटा इज इक्वल टू कौन लिख परिया vy by vx लिख परिया ओके vx टा केते रहइबो v नॉट जति थिला सेति के रहइबो काहे कि ना हॉरिजॉन्टली कौन से फोर्स पडुनी जहाँ भी फोर्स पड़ुछि वर्टिकली पड़ुछि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ कि ना तो हॉरिजॉन्टली फोर्स जदि पडुनी हला कौन से एक्सेलरेशन भी नाही तो वेलोसिटी कौन रहइबो कांस्टेंट रहइबो सेति के रहइबो माने मैं लिख परिबो कोन vx जगह लिख दबा v नॉट vy हमको बाहर करे तो vy इज इक्वल्स टू हमें कौन लिख परिया इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिया uy प्लस ay इनटू t v इज इक्वल्स टू u प्लस at फॉर्मूला पुट कर परिया हमें मेडी y कौन में लिखछि हमें मोशन में प्लेन पड़ला जानछे कि y कंपोनेंट x कंपोनेंट को कौन से इफेक्ट पकेबोनी x y को किछ इफेक्ट पकेबोनी आ हमें बोथ को इंडिविजुअली सॉल्व करिया ठीक तो से मैं लिखछि ओके जेतला से इनिशियली भितर को गला देखो ठीक है आरो y कंपोनेंट केते अछि 0 अछि x कंपोनेंट किंतु v नॉट अछि ओके तो एटी y इज इक्वल्स टू 0 हिजबो vy इज इक्वल्स टू कोन हिजबो ay t होंगे ना एबे हम कोन बाहर कर अछि ay बाहर कर अछि ay माने कोन ना आरो ऊपर जो फोर्स पडुछि हला वर्टिकली तो एक्सेलरेशन कोन हो देखो मु लिखि पारि कोन को टाइम फोर्स पडुछि ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पडुछि दैट इज fe इज इक्वल्स टू कोन लिख पारि q e एटी चार्ज केते अछि छुआ ना e अछि तो सेही हिसाब रे मु q जगह लिखि दोछि e fe जगह कोन लिख परिया मास इनटू एक्सेलरेशन लिख परिया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय ay है इज इक्वल्स टू जो e हमको ay बाहर कर तो सही हिसाब रे कोन हिजो e कैपिटल E डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नहीं कि सेटी पुट करी तो vy इज इक्वल्स टू कोन हिजो e डिवाइडेड बाय m e मल्टीप्लाई बाय t अछि t होछि कोन टाइम मन पकाओ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम थिला तो टाइम इज इक्वल्स टू कोन हिजो टाइम इज इक्वल्स टू हिजो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस सेठी केते कवर करे ताकू ना l लेंथ कवर करे अछि हो बिना तार स्पीड केते अछि हॉरिजॉन्टली ना v नॉट अछि हॉरिजॉन्टल स्पीड ता केते अछि v नॉट अछि मन रखो x कंपोनेंट पाई बोली हमें x कंपोनेंट रे जहां भी जिंस अछि जहां फिजिकल क्वांटिटी छि नबा माने मु एट जदी l लेंथ को होछि l लेंथ रा कोडी अछि हॉरिजॉन्टली अछि तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नेबी वर्टिकल कंपोनेंट को नेबी तो सही हिसाब रे डिस्टेंस इज l स्पीड इज v नॉट टाइम जगह पुट कर दबा कि दैट इज l by v नॉट एबे एटा को आनी के एटी पुट कर दियो तो ये कोन बनि जइबो e कैपिटल E l हला डिवाइडेड बाय m into v नॉट रो स्क्वायर तो थीटा इज इक्वल टू कोन हे जो tan इनवर्स E कैपिटल E l डिवाइड बाय m v नॉट रो स्क्वायर सॉल्व बुझि पले दियन सर ठीक है ना मैं आगु जइबा ओके सो आज मैं दी था पुणी भेट नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक टिल देन कीप लर्निंग थैंक यू।